Om Sri Chinmaya Sadgurave Namah. Verse number 3 to 6. Vishayeshvavishesh sankalpayati tadgunan samyak sankalpanat kamaha kamat pumsah pravartanam Vishayeshvavishesh विशेष चेतः विषच्चेतः विषयेष्वाविषच्चेतः संकल्पयति तद्गुणान् सम्यक् संकल्पनात् कामः कामात् पुंसः प्रवर्तनम्. When the mind enters the sense objects, it reflects upon their qualities. From mature reflection arises desire. After desiring, a man sets about to gain that thing and thus fulfill his desire. The next three sets of slokas have directly taken from Bhagavad Gita, 2nd chapter. Chetaha Vishayeshu Avishat Tad Gunan Sankalpayati Samyak Sankalpanat Uditaha Kamat Pumsaha Pravartanam. Chetaha means Antakarana, the inner instrument, the composition of mind, intellect, memory and ego, mon, buddhi, chitta, ahankar, vishayeshu, in vishaya. Which vishaya? Shabda sparsha, rupa rasa gandha. In that vishaya, avishat, merged into that vishaya, attached into that vishaya, attracted into that vishaya, feel that oneness with that vishaya, that is called avishat. That avishat word came in Kathopanishad. Shraddha aviveshaha. Tad gunan, of their qualities, sankalpayati. When I am coming, my indriyas coming contact into the vishaya, my mind starts doing sankalpa. I want that. First sankalpa doesn't come. What comes first? Oh, what a wonderful chair, wonderful wallet, wonderful laptop,
wonderful mobile phone. It gives Sukham. Then comes, it may give me Sukham. Then, slowly we are entering, na? It must give me Sukham. Only this can give me Sukham. দেখো, তুমি আমায় সারা জীবন কিছু দাও বা না দাও, এইটি একটা দিও, এটার আমার বড় শখ সারা জীবন থেকে, এতেই আমি খুশি। তাহলে প্রথমে ফার্স্ট সত্যত্ব বুদ্ধি, and then শোভন অধ্যাস. Then my mind start taking resolve, sankalpa. I have to acquire it. Sometimes this process happens very quickly. It happens for anything else. Whenever you are going to the market, vegetable market, and you purchase so many vegetables or fruits, applying the same theory, that this fruit will give me sukham. This vegetable I will make like this, like this, like this. So, चेतः विषयेषु आविशत तद गुणान संकल्पयति. तो संकल्प करना हो गया. दिन पंचमी, सम्यक संकल्पात, बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं. अरे रे रे रे, कुछ भी विषय ले लो, आपको जो प्रिय है, अप्रिय है, जो भी है, जो अप्रिय है उसके बारे में भी हम लोग सोचते हैं. Isn't it? We always think of them. Then सम्यक संकल्पनात् अभिलाषः, भोग करने का इच्छा उदित होता है, उठता है. कामात पुंसः, काम से, कामना से, डिजायर से, पुंसः ऑफ द पुरुष, प्रवर्तनम, ये काम्य वस्तु भोग करने के लिए बार बार इच्छा होता है. ताल की बड़ा, देखा अम्मा क्या सुंदर बनाया. Can't you prepare one more time? भोग करने का इच्छा, जिसका भी हो, चाहे वो आप तो हो या मेरा भी हो, उनके लिए अगर विषय बहुत ताकतवर होगा तो ये चिंतन बार बार आता है. एंड वी फॉरगेट भगवान. We forget Bhagavan very easily for the Vishaya. Yesterday in Ramcharitmanas class, I was telling you that things. Gita second chapter, 62 number sloka, Bhagavan has told the same thing. Anga sanjayate kama. कामात् क्रोधः विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. So to drive home the idea, an example is given. No, when the mind enters the sense objects, meaning when the mind entertains the sense objects,
trouble start. Actually, we allow problem to problem us. We allow Vishayas to enter into us and to rule over us. पहले विषय में था, जितना उम्र होता है विषय बदल जाता है, इच्छा नहीं। बचपन में खिलौना था, उसके बाद माँ बाप था, उसके बाद गर्लफ्रेंड था, उसके बाद बीवी या पति था, उसके बाद पुत्र था। अभी इस उम्र में ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड चिल्ड्रन, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। विषय बदलते हैं लेकिन घटना एक ही हो रहा है। वी आर अलाउइंग विषय to enter into us. As a physical body, my daughter or son or granddaughter or grandson, they are not entering into my body. As thoughts they are coming. Why? I am allowing. It gives me sukham. जब वस्तु से सुख मिलना चालू हो जाएगा, भगवान से सुख कम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? वी फॉरगेट जिनसे आज सुख मिल रहा है वो भी भगवान की एक रूप है। तो प्रॉब्लम क्या है स्वामी जी? भगवान को ही तो प्रेम कर रहा हूं। क्या भगवान सोच के प्रेम कर रहे हो? नहीं। मेरा पोता, मेरा पोती, मेरा बेटा, मेरा बेटी, भगवान के बोध से प्रेम नहीं हो रहा है। भगवान के सिवा है क्या? इन 1952 in Sandipani, 52 or after that, in 50s or 60s. Gurudev was in the room. A lot of devotees came to meet Gurudev with a lot of gifts. एक अम्मा ने देखा जपा पुष्पम हुआ है, तो मैं तो कुछ नहीं लेके आया, गुरुदेव की चरणों में तो फूल दे सकता है। गुरुदेव was keen observer of everything else. बगीचा में कौन सा फूल हो रहा है उनका उसका भी पता था। The man of perfection is perfect in everything else. इसे आप संसारी मत बोलिए। हर man of perfection is like that. They are very alert and conscious about everything else. Even for the Sri Ramakrishna, who on and often used to go for ecstasy, there are differences, ना? भगवान श्री रामकृष्ण कभी काम नहीं किया, तो उन्होंने उनका भी देखिए, उनके रूम में कहां पर क्या चीज रखता था, सब कुछ पता था। बगीचा में कहां पर क्या दिखा है, वचनामृत, इट्स रिटन, इट्स डेपिक्टेड। एंड आवर गुरुदेव वाज कर्म योगी, तो he opened the door, met everyone else. When जपा पुष्पम उस व्यक्ति ने गुरुदेव की चरणों पर रखा, गुरुदेव बोला, अरे ये तो मेरा पुष्प मुझे ही दे रहे हो। Then Gurudev stopped. We all do the same thing. What is yours?
भगवान के समान ही भगवान को दे रहे हो। अहंकार विमोरात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। गलतफहमी से लगता है अरे मेरा बनाया हुआ चीज मैंने किया है, मैंने दे रहा हूं। स्वामी जी ये सामोसा देखिए तो मेरा माँ ने बनाया, कचौरी मेरा बीवी ने बनाया, ये मेरा उसने बनाया। That I-ness comes, we forget I have not procured anything else. Everything is God's, an offering to God. अगर ये भावना आ जाएगा ना, वही काफी, वही तो चाहिए। We can't offer anything else of ours except our whole mind, whole devotion. वो आपका खुद का है, आपका मन, आपका प्रेम, आपका श्रद्धा, आपका भक्ति। अगर देना चाहते हैं तो उन वो सब दीजिए, और नहीं तो कुछ भी दो उसके साथ दो, उसके सहायता से दो। Then that will be the great charity, that will be sadhan, that is danam. Atma danam is the only danam. Whatever the thing you give, चाहे वो पैसा हो, सामान हो, खाद्य वस्तु हो, खुद को दो उन सब से, then it is dhanam. Gurudev told, it's not my word. If the objects come to the mind by themselves, nothing untoward happens. If your mind goes to the objects, you are a victim. If your mind goes to the objects, you are a victim. फंस गया। Note the difference. It is like someone coming to your house, then you are the master. He may be seeking a favor from you, but when you go to another's house, you are a guest and he is the master. When my mind entering into the Vishaya, then Vishayas are our master, guiding force. That's the thing. When you go to anyone's place, you are the guest. When your mind is indulging anything else or entering into the Vishaya, you are not at all master over there. Then you have to ask, थोड़ा सा पानी मिलेगा? वॉशरूम कहाँ पर है? Similarly, when the mind enters the object, it starts imagining their joy contents. When the joy contents in an object have been contemplated upon for long, you come to believe that there is some great joy therein. Therefore, your mind starts seeking that objects in order to get at the illusory joy. Illusory joy. If the mind is seeking an object, it is always prompted by a desire which can be fulfilled only by its possession and intimate enjoyment.
विदाउट डिजायर जो काम होता है उसे कर्तव्य बोलते हैं. विदाउट डिजायर whatever we do. See, भगवान श्री राम कृष्ण सिर्फ अवतार पुरुष नहीं, सन्यासियों की राजा. He used to keep his own mother with him in her lifetime. स्वामी विवेकानंद पूरा के पूरा फगुआ पहना हुआ सन्यासी. He used to travel with his mother after coming back from West. विश्व विख्यात स्वामी विवेकानंद. Why? Kartavya. He was the only able son over there on that time. Bhupendranath and all other were really is a teen or tender age. कर्तव्य. एक व्यक्ति चाहे वो सन्यासी हो, जब तक शरीर ज्ञान है, भूख है, क्षुधा है, तृष्णा है, तब तक you have to perform your कर्तव्य. When the illusion of an expected joy is maintained in the mind continuously contemplates upon the object. Then the desire for possessing the object arises. Because of the desire, man starts acting to obtain the desired object, for according to one's desire will be one's actions. When a man thinks of objects, attachment for them arises. From attachment, desire is born. From desire arises anger. From anger comes delusion. From delusion, loss of memory. From loss of memory, the destruction of discrimination. From destruction of discrimination, that person gets perished. But when the sense objects come to the mind, and if the mind has got the desire for it, it will become the victim. Controlling the mind from running after sense objects is called shama. Again, I am telling. Controlling the mind from running after sense object is called shama. And controlling the sense organs so that the sense objects may not enter the mind is dhamma. I will not go there is shama. He is not allowed in my room is dhamma. Clear? More important than controlling the sense organs means dhamma is the control of mind, sama. Vishaya comes much later. First, I visit Vishayas. That should be controlled first. If there is no Dhamma, the mind runs after objects and it slowly crystallizes into a desire. And the irrevocable law is as the desire, so the action.
যেমন চিন্তা তেমন কাজ। If the mind is continuously going towards Narayana, 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 desire for Narayana will increase. Desire for Bhagavan is the burning aspiration for the reality. ईश्वरे अनुराग, विषय वितराग। भगवान में अनुराग जितना बढ़ते जाएगा, सारे विषय में वीतराग उतना ही बढ़ता जाएगा। Therefore, through Dhamma and Shama, your actions will themselves become a powerful path, a spiritual sadhana. Tataswarupa vibhramsaha vibhrashtastu patatyadha patitasya vinanasham punarnaroha ikshate. Tataswarupa vibhramsaha vibhrashtastu patatyadha patitasya vinanasham punarnaroha ikshate. Sankalpa varjayet tasmat sarvanarthasya karanam apatyani hi vastuni vyadhigrasto yathotsrijet. Sankalpam varjayet tasmat sarvanarthasya karanam apatyani hi vastuni vyadhigrasto yathotsrijet. Through inadvertence, a man may deviate from his real nature. The man who has thus deviated falls. This fallen comes to ruin and is rarely seen to rise again. Therefore, just as the eatables prohibited by the doctor are not taken by the victim of diseases, one should totally give up the habit of reflecting upon the sense objects, which is the root cause for all the mischiefs. Clear? Yes. Tataha, from the Vishaya Chintan, Swarupa Vibhramsaha. मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं साधक हूं, मैं साधिका हूं, ये आइडेंटिटी चला जाता है। स्वरूप विभ्रंसः, स्वरूप एंड देह की अभिनिवेश है, राग द्वेष अभिनिवेश। सो अभिनिवेश मतलब आई गेट अटैच्ड विद दिस बॉडी, I start thinking this body is truth and this body will give me joy. Means he is my instrument to enjoyment. So, vibhrashtah tu adhav patati. जो मानो व्यक्ति अपने स्वरूप के बारे में भूल चुके हैं, भूल गया है, उनका पतन चालू हो गया है साधन जीवन। Adhav patati means
पुनर्जन्म के बाद नीच योनि में पैदा होता है, ऐसा भी मीनिंग आप ले सकते हैं। और he gets indulged into non-conducive unparliamentary work. Clear? पतितस्य नाशं विना पुनः आरोहः न ईक्ष्यते। भगवान शंकराचार्य जी ने बताया, ना तो मैं ना तो मेरा गुरु परंपरा कभी नहीं देखा कि ये जो गिरते हुए वस्तु पूरा के पूरा गिर नहीं गया, ऐसा कभी नहीं देखा। मतलब ही गेट्स फॉल डाउन फर्स्ट, देन इनका अधोगति होता है। आप सोचिए, हम लोग थोड़ा इधर से सीढ़ी स्टेप हो फॉल्स होके गिर जाते हैं, कितना आघात होता है। जो व्यक्ति जितना ऊंचाई से पड़ेगा, गिरेगा, कितना आघात लगेगा। देन ही विल, जैसे कंदू का, यू नो द गेंद, द बॉल, फर्स्ट इट gets stuck into the floor, then it comes up. ऐसे ही भगवान बोल रहा है, ये पतितस्य नाशं विना पुनः आरोहः न ईक्षते, तस्मात् संकल्पम वर्जयेत्। ये जो सारे के सारे आपके जीवन में अनर्थ है, आपको इतना दुख दे रहा है, आपको एंजाइटी में फंसा के रखा है, डिप्रेशन में फंसा के रखा है, आपके पास बिस्तर है लेकिन नींद नहीं आपकी आंखों, ड्यू टू संकल्प, आई विल डू दैट, पूरा जगत को उखाड़ लूंगा, मैं इतना दिन मुझे कोई कुछ करने नहीं दिया, आज मैं स्वाधीन हूं, आई विल डू दिस, आई विल चेंज द होल वर्ल्ड। ये भी एक डिजायर है, सिर्फ मेरे स्वार्थ नहीं कि आई विल इरेक्ट अ हाउस और आई विल परचेस कार, नॉट दैट, आई विल चेंज द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू माई थॉट। ये भी एक संकल्प है। भगवान के सिवा कुछ भी संकल्प दुखदाई होता है, चाहे वो समाज संस्कार हो या कुछ भी हो। तो कौन करेगा स्वामी जी? समाज ऐसा ही रह जाएगा। समाज तुमने पैदा किया, भगवान ने इस जगत को रचा, अगर भगवान के शरण लो तो अगर भगवान आदेश देता है तुम करो, उसी काम में कभी स्ट्रेस नहीं होता, एंजाइटी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हम लोग अपना से अपने कंधे पे उठा लेता है एंड स्टार्ट्स थिंकिंग दैट आई एम योग्य पुरुष। आदेश होने से पहले योग्य पुरुष नहीं बनता। লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়। আমরা নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভগবান থেকে সরে যাই। If we put forth all efforts, ভগবানের শ্রীচরণে শ্রীপাদ পদ্মে যদি শুদ্ধা ভক্তি লাভ, এই নে মা তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে, এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে, এই নে তোর ভালো, এই নে তোর মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে। এই ব্যক্তি, such kind of personalities, if he is ordered by the Lord himself that go and do that,
वो व्यक्ति सफल भी बनता है। उदाहरण स्वामी विवेकानंद से लेकर पूज्य स्वामी चिन्मयानंद, they were advised by the Lord. That is why people listen to them. Once fallen from our nature, there is no question of our ever easily understanding the nature of the self. Clear? Man thereafter identified with the body, mind and intellect jumps to reach the world of objects and clings onto the one object after another. When our real nature is forgotten, there is a deep and precipitous fall. He who has thus fallen goes down to a sad death, miserable destruction, an empty end. It is the tragic and total destruction of his spiritual personality. Such a fallen individual is rarely found to rise again. Therefore, don't fall is the only logical advice. Only logical advice. In order not to fall, renounce idle thinking of the world of objects. Refuse to entertain them. Contemplating upon the objects of pleasure is the cause for all sorrows and tragedies in life, and for all difficulties and faults in sadhana. Renounce, reject and refuse. Renounce, reject and refuse. Again I am telling, renounce, reject and refuse all the idle rambling of mind. Cry halt to the wandering mind. When the patient renounces the objects which his doctor has advised him not to eat, he will get cured of his illness. When the objects are in front of us, ordinarily we would love to take them. But in order to come out of the disease, we must reject them. Similarly, let the mind, which is now suffering from sensuality, reject its tendency to contemplate upon sense objects. Reject and rise above the senses. When the sensuous ideas come, positively let us turn our thoughts to the higher and learn to rise above the cheap sensuousness of our thoughts. The main theme is continuous remembrance of Lord. Narayana, Narayana, Narayana. Shiva, 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 Shiva. Krishna, 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 Krishna. What I try to tell every day. Alert living, conscious living, whatever you are doing, I am doing it for the Lord, not for any Vyakti, not for anything else. Whatever I am doing it for the Lord. Hari Om Tat Sat.